Harshit, I want a new smartphone for my brother. ओके बट बजट क्या है? ज़्यादा नहीं है, 30K. ओके आई हैव अ लिस्ट। मैं आपके साथ साथ आप सबको भी बता देता हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन भी बताने वाला हूँ। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब गैजेट्स 360। So firstly, we have Motorola Edge 50 Pro. This smartphone is a good option अगर आप classic looking and थोड़े stock Android OS के ज़्यादा आपको पसंद है तो। This smartphone comes with Snapdragon 7 Gen 3 processor, which is a good and powerful processor. Also, you get Android 14 OS running on this device, but आपको इसमें 3 major Android upgrades भी मिल जाएंगे। Motorola Edge 50 Pro comes with 6.7-inch big display with 144 Hz of refresh rate and 2000 nits पीक ब्राइटनेस, तो आप इसे बाहर डे लाइट में भी आसानी से यूज कर सकते हो। टॉकिंग ऑफ कैमरा, दिस स्मार्टफोन कम्स विद ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफ 50 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल which can record up to 4K as well. And a plus point is that you also get a 50 megapixel selfie shooter which is really impressive. Lastly, the device comes with a 4500 mAh battery which can last longer, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके साथ में आपको 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट मिल जाती है। Now, if you want a smartphone with superb design and साथ में you also want a good camera, then this is for you. You get 6.7-inch big display with Snapdragon 7 Gen 3 processor. If you talk about camera, then you get 50 megapixel main lens with OIS support as well. साथ ही में you also get 50 megapixel telephoto lens with 2.5x optical zoom and 12 megapixel third lens. साथ ही में अगर सेल्फी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी आपको मिल जाता है। टॉकिंग ऑफ बैटरी, यू गेट 5200 mAh ऑफ मैसिव बैटरी विद दिस डिवाइस। Now, if you want a smartphone with folding mechanism so that you can flaunt in front of your friends and you can show your friends, then this smartphone is for you. This is Tecno Phantom V Fold and you get a 6.9-inch big display when you unfold the device, लेकिन cover display आपको 1.32 इंच की big अच्छी खासी मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो you get MediaTek Dimensity 8050 processor with this device, and if you talk about camera, then you get a dual rear camera setup which is of 64 plus 13 megapixel. Talking of selfie camera, you get 32 megapixel selfie shooter and both cameras can record and shoot good videos and pictures as well. And for all this, you also get a 4000 mAh big battery with this device, तो आप इसे लंबे hours तक अपने साथ यूज कर सकते हो। Next is OnePlus 11R. This is a good option if you want a powerful gaming phone under 30K. Plus, you also get a 6.74-inch big display. Gaming के लिए you get Snapdragon 8 Plus Gen 1 processor, which is a powerful processor any day. साथ ही में if you talk about camera, then you get a triple rear camera setup which is of 50 megapixel main primary lens जिसमें आपको OIS support भी मिल जाता है and 8 megapixel secondary lens and 2 megapixel third lens. एंड अगर सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी आपको इसके साथ मिल जाता है। एंड फॉर लॉन्ग गेमिंग सेशंस यू गेट 5000 mAh बिग बैटरी विद दिस डिवाइस, एंड दिस डिवाइस आल्सो सपोर्ट 100 वॉट फास्ट चार्जिंग। So lastly, I have a smartphone which is the Poco X7 Pro. And if you want a smartphone जो all rounder हो, so इसको आप जरूर consider कर सकते हो। If we talk about processor, you get a MediaTek Dimensity 8400 Ultra processor जो कि एक नया processor है and काफी powerful भी है ये। If we talk about camera, then you get a dual rear camera setup with this device which is of 50 megapixel primary lens जिसमें आपको OIS support भी मिल जाता है and secondary lens जो है वो 8 megapixel का है, and this whole camera setup can record up to 4K as well. If we talk about selfie camera, then you get a 20 megapixel selfie shooter with this device. But the best thing is that this device comes with a massive 6550 mAh of battery which is exclusive in India. So these are the best smartphones under 30K budget that you can buy. If you ask me which one of them do I recommend, then I would say if you want a folding phone, then Tecno एक अच्छा option है. But if you want an all-rounder phone, then Poco X7 Pro is the best phone under this budget मेरे हिसाब से। What do you think? Do let me know in the comment section and don't forget to follow and subscribe Gadget 360. I'm your host Harshit Arora signing off. I'll see you in the next one.